Okay, thank you so much then. So, very good morning to everyone. So, my name is Satish Hegde, and today I'm very happy to present Lanquil. So, give me 1 second. Let me share the screen. Today's agenda. So, हम क्या करेंगे? What we will do is, let us make it bit interactive. I really don't want one way. ठीक है, थोड़ा स्लो जाएंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये क्या है. एंड दूसरा चीज ये है कि आज तो ज्यादा लोग नहीं है. आई मीन वी हैव अबाउट 15-16 पीपल, बट वी कैन शेयर द रिकॉर्डेड सेशन विथ एवरीबडी सो दैट it is beneficial. Okay, so today's agenda is let me explain how Lanquil can add value. ठीक है, तो एंड देन इंट्रोडक्शन टू lanquil.com है ना. तो अभी लेट मी माय हिंदी इज थोड़ा, आई मीन इट्स बिट बैड, सो यू हैव टू पार्डन मी इफ आई मेक सम व्याकरण का मिस्टेक. इफ आई डू देन you have to really pardon me. Okay, so awesome. So the question is, आज जो हमारा वसंत कन्या का स्टूडेंट्स है, so उसका करियर गोल क्या है. ठीक है, what you can do is I request you to write on the chart, instead of or even you can unmute yourself and answer कर सकते हैं आप. सो आज स्टूडेंट है हमारा इसमें डिस्कशन में. सो कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताइए कि आपका करियर गोल क्या है और अभी आप क्या कर रहे हो. My name is Priya. I am from second year and my honors is psychology. After my graduation, I want to pursue masters in psychology. Awesome. So after masters के बाद, whether you want to go for a government job, private job, or you want to become an academician, or you want to become an entrepreneur, so मैं तो career goal पूछ रहा हूँ. So there are two things, right, प्रिया जी. So एक है academic goal है, जो मैं JNU में PhD करना चाहता हूँ, वो तो academic goal है. और करियर गोल ये है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, है ना. सो आपका करियर गोल क्या है. Sir, I would like to appear for the government exams, competitive exams. Awesome. That is good. So प्रिया मैडम के साथ कौन कौन है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जाना चाहते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि वैसे ही मैं काम कर चुका हूँ यूपी में, वाराणसी में, बहुत जगह, आई मीन दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड में, सब जगह. सो मैं एक चीज देखा हूँ कि स्पेशली हमारा जो डिग्री स्टूडेंट्स है, सो उसका मैक्सिमम करियर गोल रहता है, for maximum students, so at least 80-90% of the students, they opt or they want to really compete in government exams, government competitive exams, which is really good. And दूसरे बच्चे जो हैं, maybe couple of percentage of students, they would like to pursue their say post graduation and then PhD, doctoral, or even I mean higher education in India or even outside as well. और तीसरा जो है हमारा जैसा, मेरा जैसा बच्चे जो हैं, सो वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं. और रियलिटी बताता हूँ, एक है हमारा ड्रीम, ठीक है. दूसरा है, क्योंकि मैं भी आपका एज में जो था, तो मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया करता था, क्योंकि उस समय में तो जॉब्स भी कम थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002-2003 के उस जमाने में बात कर रहा हूँ. आई मीन 99-2000 का 2 का जो समय था. ठीक है, तो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में मेजॉरिटी ऑफ अस, एटलीस्ट 98% or 99% of us work in either I mean majority in the private sector. And of course couple of our students, जो हमारा वसंत कन्या का स्टूडेंट्स है, वो अकेडमिशियंस भी बनना चाहते हैं या रिसर्चर्स भी बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में या इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में अकेडमिशियंस भी बनना चाहते हैं. ठीक है,
बात यह है कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, है ना, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, ठीक है। चलो अभी देखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देना पड़ेगा, वो तो सच है, क्योंकि मैं भी दिया था। और एक बात बताऊं, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। इफ यू check my LinkedIn profile, you see that I was also a government employee. मैं भी 7 बरस गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर भी था मैं भी। चलो छोड़ दिया, वो दूसरा बात है, क्यों छोड़ा वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। मगर गवर्नमेंट, मुझे ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट अगर एग्जाम देना है तो, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, है ना, एग्जाम देना पड़ेगा। तो I mean, majority of our students, they would like to go for probably IAS officers or UP administrative service है तो probably वहाँ जाना चाहते हैं, या बैंक POs बनना चाहते हैं, या I don't know, there may be so many, I don't know much. So जो भी गवर्नमेंट का अपॉर्चुनिटीज है वो compete करना चाहते हैं, है ना। तो then is academics. So अभी one student, lady Priya, she told that she would like to pursue her post graduation. So मान दीजिए कि आप JNU में या IIT दिल्ली में ह्यूमैनिटीज में आप जाना चाहते हैं, और मान लीजिए कि इंडियन सोशल इकोनॉमिक, आइजैक जो है, आइजैक जो बहुत बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, सोशियो एंड इकोनॉमिक रिसर्च का जो इंस्टीट्यूशन है, वहां कॉम्पीट करना चाहते हैं तो वहां भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, कॉम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा चीज है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कॉम्पीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, दे डू कंडक्ट इवन एग्जाम्स एज वेल। ओके, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि लैंक्विल जो है, लैंक्विल के अंदर जो फीचर्स है वो सब आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के लिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलता हूं मैं, रादर देन टेलिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, एनी PSU एग्जाम्स, ओके, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग का जो भी एग्जाम्स है, उसमें इंग्लिश तो एक एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सो मुझे ये तो डेफिनेटली आई नो दैट English is one of the subject, okay, in any competitive exams, ठीक है। उसके बाद क्या पूछते हैं वहां तो पूछते हैं कि ग्रामर का बारे में पूछते हैं, और आपका वोकैबुलरी के बारे में पूछते हैं, और एक बड़ा सा एक पैराग्राफ देंगे, और आपका इतना इतना समय में, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स देयर, ओके, वो आंसर देना पड़ेगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट English. I'm only talking about English. So it will be like, foundation level grammar, probably up to your +2 or up to your जो 10th तक आपने सीखा है वो पूछेंगे। और लैंक्विल में वो सब है, ऑलरेडी इट इज देयर, ठीक है। तो आपका जो ड्रीम है, आपका जो करियर गोल है, वहां लैंक्विल आपको यूजफुल हो सकता है। थर्ड है प्राइवेट सेक्टर, ये तो यहाँ तो पूरा इंग्लिश का ही खेल है। मैं गांव से आया, टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू, आई वाज नॉट दैट ग्रेट एंड रियली स्ट्रगल्ड हार्ड इन एस्टैब्लिश माई सेल्फ एंड बिल्ड माई करियर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली इन IT सेक्टर। जब बैंगलोर में आया तो पूरा कल्चर शॉक लगा मुझे। तो प्राइवेट सेक्टर में तो आई मीन it's very important, and the certification can also help you in not getting, at least एक consideration है। Definitely, Lanquil can help the students in achieving their career goals. मैं ये बोलना चाहता था, ठीक है। तो लैंक्विल क्या है? लैंक्विल तो एक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, जहां आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। All the skills, listening, speaking, reading and writing, all the skills are very important for the students to build a long term career. जो हार्वर्ड बिजनेस का रिव्यू में एक आर्टिकल आया था कि ऑलमोस्ट 70% सॉफ्ट स्किल्स ही है जो हमारा करियर में हमें आगे लेके जाता है, ठीक है। तो ये वैसे ही ये लैंक्विल तो ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज लैब है,
जिसमें कंटेंट है, असेसमेंट है एंड सर्टिफिकेशंस है. सो इसमें it also has a AI supported English grammar, text and style so that the students can write or upload on this platform. and मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि वैसे आप पैसा दिए हैं और परचेज किए हैं, प्लीज यूज कीजिए. सो अगर 10 बार हमें आपको डेमो देना है तो हम दे देंगे, क्योंकि व्हेन वी वर्क विथ अ कॉलेज वी वुड लाइक टू एंश्योर दैट जो आपका पैसा है, वट एवर इज द मनी, इट्स 10,000 रुपीज और 100 रुपीज, वट एवर इज देयर, द वैल्यू शुड बी मोर फॉर यू, यू शुड बी हैप्पी. ओके, वो गोल है हमारा. ठीक है, तो आप ये कंटेंट देखिए, थोड़ा बहुत एटलीस्ट ग्रामर प्रैक्टिस कीजिए, वोकैबुलरी प्रैक्टिस कीजिए. जब भी आपको टाइम मिलेगा तो प्लीज राइट समथिंग and try certifications. Try to avail 7 levels of certifications. We are partner of NEET, in the sense National Education Alliance for Technology Platform, which is identified by AICTE. I mean गवर्नमेंट हमें आइडेंटिफाई किया है, वो सब तो ठीक है. बट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के, आई मीन विथ यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, कि आप यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ इश्यू है या चैलेंज है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन इवन शूट अस अ मेल एज वेल, एक ईमेल भी भेज सकते हैं. ठीक है, तो यूजी स्टूडेंट्स को और पीजी स्टूडेंट्स को कैसा यूज होगा, तो मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप LSRW स्किल्स इंप्रूव कीजिए, और कैन हेल्प, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि it can help you in better employability and English proficiency, and you can avail certificates ही अभी जो 7 level certificates जो है, that you can download. and अगर आपका LinkedIn अकाउंट है तो वो एक आप वहां भी शेयर कर सकते हैं. आपका दिखेगा, I have not seen many of the students of Vasant Kanya tried any language certification as of now, because मैं देखता रहता हूँ कि कितना बच्चे क्या क्या कर रहे हैं. So I always check. I have not seen many of the students tried. I request you to try so that you will understand. You may be really good, and you may clear up to third level, fourth level, and I request you to try up to 7 levels as well. So, Kasturi madam, hello. Yes, sir. Yeah, Yes. over to you, ma'am. Over to Okay. you. It is Okay. visible. And I am audible, right? Yes, you are audible. Okay. So जैसे सतीश सर बोल रहे थे, how he had like given us a background of what Language platform is. Language platform वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब बच्चे you can enhance your English learning skills. वो अभी रीडिंग में जैसे सर बोल रहे थे कि किसी किसी को रीडिंग में दिक्कत हो सकती है, किसी को राइटिंग में दिक्कत हो सकती है. हम सब मॉड्यूल्स में हम उतने अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, राइट. सो क्या होता है कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. सो ये है लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, और इसमें आप अपना क्रेडेंशियल्स दे के, जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड दे के, यू कैन जस्ट लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म. तो वंस यू लॉग इन, यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो है आपका पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड. इसको हम डैशबोर्ड कहते हैं. क्यों हम लोग इसको डैशबोर्ड कहते हैं? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. बिकॉज यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए मेरा नाम कस्तूरी है, और ये मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिस, मैंने जितनी द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव प्रैक्टिस्ड, और द नंबर ऑफ टाइम्स आई मीन the amount of time I have spent on this platform, that clearly highlights over here. तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मेरा लिसनिंग में 50% स्कोर है, मेरा स्पीकिंग में 45% स्कोर है, रीडिंग में मैं बहुत ही मतलब वीक हूँ, मुझसे मुझसे रीडिंग ठीक तरह से होती भी नहीं है, तो मेरा 31% स्कोर है. ऐसे आगे जाके आपको यहाँ पे ग्रामर, राइटिंग, वोकेबलरी सब कुछ दिखेगा.
तो व्हाट हैपेंस हियर इज, इससे आपको एक आइडिया मिल सकती है, फ्रॉम हियर यू कैन हैव एन आइडिया दैट विच ऑल मॉड्यूल्स यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन। जैसे मुझे पता है कि मुझे रीडिंग में थोड़ी और एफर्ट डालनी होगी, वेर इन वोकेबलरी और राइटिंग तो बहुत अच्छी है मेरी, ग्रामर again I have to put in a lot more effort, listening also I am somewhere moderately okay। so इससे एक साफ साफ क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि कहाँ पे जाके मुझे कितनी एफर्ट डालनी होगी इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दी 6 मॉड्यूल्स। एंड ऑल्सो अगर आपको नहीं पता, सपोजिटली मुझे, मैं स्पीकिंग में 45% दिखा रहा है, मुझे नहीं पता ये 45% स्कोर ठीक है या मतलब आई शुड इम्प्रूव मोर और आई कैन कंटिन्यू विद दिस। तो ये स्कोर क्या इंडिकेट करती है कि मेरा कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, वो भी यहाँ पे दिखेगा। व्हेन यू रीड दिस you know where exactly you stand in terms of your learning process। आगे जाके आपको जो दिखेगा वो है लर्निंग ग्राफ। यू विल गेट टू सी द लर्निंग ग्राफ, एंड इन द लर्निंग ग्राफ लाइक मेरा लर्निंग ग्राफ थोड़ा हैपेजर्ड है क्योंकि हम लोग इस पे डेमोज देते रहते हैं और लाइक आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वेरी रैंडमली। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आपका प्रैक्टिस करते रहेंगे इन एवरी मॉड्यूल, तो आपका लर्निंग ग्राफ भी बहुत सही तरह से आपको दिखेगा। और उसके बाद जो आता है दैट इज योर असेसमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन, क्योंकि आपने कितनी असेसमेंट लिया है, आपने कितना सर्टिफिकेशंस लिया है, कौन से डेट पे लिया है, आपका रॉ स्कोर क्या है, आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है, ये सब आपको दिखेगा। तो ये डैशबोर्ड से जो आपको पता चलता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर एग्जैक्टली यू आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग प्रोसीजर, इंग्लिश लर्निंग स्किल के हिसाब से आप कहाँ पे हो, वो आपको दिखेगा। All right. Now moving forward, next we have the अब ये डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी कैन प्रैक्टिस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये LSRW स्किल्स जैसे सर ने आपको पहले ही बताया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर यू गो फॉर हायर एजुकेशन और वेदर यू लुक फॉर अ जॉब। बिकॉज देखिए अभी हम सबके लिए जॉब, एक जॉब पा लेना ही सब कुछ नहीं होता, वो जॉब को सिक्योर करना, वो जॉब को रिटेन करना, ये बहुत बड़ी चैलेंज हो चुकी है आज की दुनिया में। तो इन फॉर दैट, एज यू नो दैट आप जब, अब ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे बड़े हुए हैं वहीं पे हमको जॉब मिलेगा, वहीं का लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ आई एम अ बंगाली, आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम कैलकटा, बट आई एम बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। लेकिन अभी बैंगलोर में अगर सबको तो बंगाली समझ में नहीं आएगा, राइट? तो वहां पे जाके अब मैं कन्नड़ा नहीं बोल सकती, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कैन नॉट स्पीक। सो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, सबके साथ मैं कैसे बातचीत करूँ? तो वहां पे दैट इज वेयर इंग्लिश कम्स इनटू पिक्चर। तो अगर मैं सबके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, अगर मैं सबको समझा नहीं सकती अपना व्यू पॉइंट, अगर मैं दूसरों का व्यू पॉइंट समझ नहीं सकती, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे एम्प्लॉयबल, टू increase my value in the professional market, or as to make people understand my viewpoint, or rather to understand their viewpoint as well। तो यहाँ पे इसीलिए इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। एंड उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात समझूं, आप मेरी बात समझे, बस खत्म, ऐसा तो हो नहीं सकता। In spite, other than this, so listening is important, speaking is important, पढ़ के कुछ पढ़ के समझना, that is where reading is important। और दूसरी बात ये है कि ईमेल्स लिखना, नोट्स लिखना, थीसिस लिखना, आप कॉलेज में हो या आप जॉब में हो, कोई भी हो, आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए। that is where all these skills are very very important। and the next thing is, आप कब बोल सकते हो, आप कब ठीक से लिख सकते हो, आप कब ठीक से सुन सकते हो, समझ सकते हो, दैट इज वेयर द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेरा अगर ग्रामर थोड़ा बेसिक ग्रामर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम आई शुड बी लाइक अ स्कॉलर नोइंग एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ टेक्निकली करेक्ट ग्रामर, नो, बट थोड़ी बेसिक ग्रामर की नॉलेज और थोड़ा वर्ड स्टॉक ऑफ वर्ड्स मेरे पास अगर वर्ड्स का स्टॉक कम्युनिकेट के लिए ग्रामर और वोकेबुलरी भी
बहुत बहुत important होती है when it comes to developing your overall communication skills in English. So that is why you really need to master, you really need to gain competence in all the 6 modules. So let me show you how each one module can be practiced on this platform. The first one is listening. अब listening आप अगर जब चाहोगे प्रैक्टिस करने के लिए तो वो सबसे पहले आपको ये कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखेगा. अब ये मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये है, ये प्लेटफॉर्म एडेप्टिव है. अब जब मैं बोलूं एडेप्टिव, आपको समझनी पड़ेगी कि एडेप्टिव मतलब क्या होता है. एडेप्टिव मतलब अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो देख रहे हो ये बेसिक है, उसके बाद एलिमेंट्री है, उसके बाद इंटरमीडिएट है, प्रोफिशिएंट है. तो मैं जब प्रैक्टिस करना चालू करूँ ये प्लेटफॉर्म पे, मुझे पहले क्वेश्चंस एकदम बेसिक लेवल से दिया जाएगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म को भी पता नहीं है कि, और शायद मुझे भी नहीं पता कि मेरा कॉम्पिटेंस लेवल कहाँ है, मैं कौन से तरह की क्वेश्चंस ठीक से आंसर कर सकती हूँ. तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस बेसिक लेवल से दिया जाएगा जो pretty much easy होती है. Now when I am able to do this successfully, तब वो सब questions का complexity थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा. And then I will go to the elementary level. Then again I fare well in these two segments. Then I will start getting questions from intermediate. And then finally proficient. अब जब तक I don't score really well and I don't get a hang of the questions that come from the basic level, I will not be given questions from the higher levels. That is why I am saying that it is an adaptive platform. You will adapt yourself to the questions. The platform will adapt itself to your requirement. Only then you will be taken higher up the levels. And this is where the platform becomes individually adaptive to your requirement, your particular requirement. Okay? Now going forward, we have the listening practice. Now listening practice में, and what you will have to do is you will have to listen to an audio script. Now when I say audio script, ये सब audio scripts किसी भी accent में हो सकती है, because ऐसा नहीं है कि हम Indians है तो हम कहीं पे भी जाए हमको Indian accent ही सुनने को मिलेगी, नहीं है. We should be able to, when it comes to understanding or comprehending what I hear, it could be any accent from any part of the world. It can be any particular audio script. So you have to listen to it and then answer the question. It basically tests you on your level of comprehending of what you hear. कितनी समझ में आई आपको? How much did you understand? ये यहाँ पर assess होगा. So you have to play the audio script, and अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे हर एक audio script के लिए एक particular time allot किया हुआ है, so you have to finish this task within this particular time frame. You cannot take any time that you want. So आपको ये सब questions जो कि ये audio script के ऊपर based है, you have to listen to it and keep on answering. That these are all multiple choice questions. Right now I'm just answering it based on like my like randomly. I'm not listening to the audio script because I'm just showing you how to go about it. And then you can see probably I have just answered 2 or 3 questions correctly. So my score is at 50%. If I am not happy with this score, मैं जाके दूसरी बार ये same audio script try कर सकती हूँ, or I can try a new audio script from this platform. Clear? Now let's move on to the speaking module. The speaking module is also like here. What you have to do is you have to read this. Speaking, आपका intonation, आपका pronunciation, आपका dialect, आपका voice modulation सब कुछ test कर सकते हैं. ठीक है? So you can start the recording. Hello and thank you for calling Langwell. My name is Anish. At this time, I'd like to let you know that this call may be recorded for quality assurance. So now whatever you read, let me tell you one thing, that we are in the transition phase. So sometimes Satisa, this I think is not appearing on the right hand side till now. No, no, it will come actually. आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा मैडम.
So, anyways, You but submit just it, no? You submit huh, it. so you can just recheck if the whatever you have said matches the original script or not, and then you can submit it. So right now it doesn't match, and the score is at 15%. So again, here also you have an option to try again the same script or maybe try a new script. This is how the speaking module works. Going forward, we have the reading thing. The reading is pretty much similar to आप सबने जो किया है in your schools and maybe in fact in your colleges also. Like you have to read a small passage, or you maybe the passage could be bigger also depending on what level you are at. और वो पढ़ के आपको उसके ऊपर जो questions है वो सब answer करना पड़ेगा, and that too within the allotted time frame. You cannot take as much time as you want, and you can just answer these questions. So you can see that based on this passage, there are almost 7 or 8 questions, and maybe my answers were all wrong. So the score is only at 42%. So for each of these modules, you have the option to try the same script, or try the same passage, try the same audio script, and or else try something new from this platform. This platform is loaded with content, so you can keep on practicing as many times as you want, how much ever to whatever extent you want to develop your communication skills in terms of all the 6 modules. Next, before moving on to writing, what I would like to show you is the grammar quiz. So grammar में, like Satish said, grammar is also important. ग्रामर प्रैक्टिस आप जितनी बारी हो सके आप ग्रामर प्रैक्टिस वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर सकते हैं. You will be given questions randomly, and if you have to keep on answering, there would be 10 questions that you need to answer, and at the end of 10 questions you will be given the correct, in case you have answered correctly, yeah, they will be shown to you. In fact, in case if you have not answered the questions correctly, then the correct answers will also be shown to you. All right, I'll just show you one for example. This is how the exactly the same way. Even see, so my score is only 10%. So as you can see, all the answers that I have chosen are incorrect, and they are highlighted in red, and the answers in green are the correct answers. All right. So this is how even the vocabulary builder also works. Now, the last module that I would like to show here is the writing module. So writing module में आपका दो option, in fact तीन option है. The first option is where you can upload a document, that is already uh, with you. Maybe you have prepared a project report, maybe you have prepared a thesis report, and you can upload that document. So let me show you how. Just takes a couple of minutes to upload, and ये एक document है. आप जैसे upload करेंगे, it will take roughly about 2 minutes to it's based on real time analysis, and as you can see, as it gets analyzed, all the errors are highlighted here. So you here the major categories under which the errors are highlighted is the grammar, vocabulary, and style. So it gives you a detailed description of how many characters are there, mistakes, suggestion, and also the best part is it gives you the document quality. That right now with so many errors in your document, where what is the quality of your document? So right now you can see आपको दिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किया है उसका डॉक्यूमेंट क्वालिटी 63% है. As I keep on making the changes or making the I take the suggestions that Landfill has to offer, the quality of the document increases. Before it was at 65%, making one change has taken it up by 3%, that is 68%. Not only that, you also, when you keep on making the fixes, and at the end of it, when your document quality is at 100%, you know that your document is totally error free. उसमें और कोई भी एक error नहीं है. So apart from this, what you get to see here is the error, the suggestion. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक learning platform है.
लैंग्वेज इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इधर आए, यू जस्ट अपलोड अ डॉक्यूमेंट, आपको मिस्टेक्स मिल गई, आपको आपने उसको सब फिक्स कर दिया एंड यू टेक बैक योर डॉक्यूमेंट विद यू। नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पे एरर हुआ था, व्हाई इट वाज एन एरर, सो यू विल कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। सो इसमें क्या होता है, लर्न, you will not learn. Until you learn, you will never be able to rectify your mistakes. So what happens here is you have the option to learn. So यहाँ देखिए मेरा ये गलत है, ये स्पेलिंग ऐसा है, लेकिन क्यों ऐसा है? The verb chosen is used here not compatible with the helping verb word. So consider changing it to chosen. So ये जब आपने ये explanation पढ़ लिया, आपको concept समझ में आ गई। एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, अब सब हम ऐसा नहीं होता कि एक्सप्लेनेशन पढ़ लेने से कॉन्सेप्ट हमेशा समझ में आती है, उसके साथ उसके रेलेवेंट एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जिसको आप एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपसे ये एरर दोबारा नहीं होगा। So that is where we say that Landfill is a self-learning platform जहाँ पे आप not only can fix the errors that you have made, but also you can learn in the process. दूसरी बात ये है कि ठीक है, मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसको इंग्लिश इतनी अच्छी से समझ नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ? मुझे ये जो एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स दिया हुआ है, मेरे को मेरे आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। सो मेरा यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया हुआ है, दैट इज द नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट। अब जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, मेरी मदर टंग बंगाली है, तो मुझे ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ? आई हैव द ऑप्शन टू सी दिस इन बंगाली। Similarly, there are native language supports for Hindi as well. आपको हिंदी समझ में आती है, आप यही सेम सजेशन हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से और एक चीज जो यहाँ पे है वो है आपको रीडेबिलिटी स्कोर। मतलब मैंने रीडेबिलिटी स्कोर मतलब क्या होता है कि आपको एक डिग डाउन रिपोर्ट मिलेगी कि कितने सारे गुड गुड सेंटेंसेस आपने यूज किए हैं, कितने वर्ड्स आपने रिपीट किए हैं इन दिस एंटायर passage, how many good length words are there, how many bad length words are there, how many good length sentences are there, ये सब आपको मतलब यहाँ मिलेगा। And based on this, you can actually improvise on your writing skills, and you can improve your writing skills, and you can make corrections the next time you can write. The next option what you have in the writing module is also to download the document or the report. Now आपने सब fixes कर लिए, यहाँ पर लैंग्वेज ने जितने सारे errors दिखाया, जितने सारे suggestion दिए, based on that you made all the fixes. Right? After making the fixes, you have the option to download the corrected document from here, and not only that, you can also download the report. अब report मैं जब बोलूँ तो ये सारे चीज, so that at a later stage, even if when you are offline, you can have access to the report, you can go through the suggestions, you can go through the examples and learn. So this is how basically the writing module works for every time, anytime when you upload the document, when you write something। देखिए अब यहाँ पे और एक option है like the speak and learn. So when I say speak, my name is Kasturi Moitra and I am giving a demo for Langwell platform. Can stop recording. I can just review it once and then submit and analyze. Again, it will take. So देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आई. So see, this is a spelling mistake. I can make this errors, but even then, because this is my name, it is not able to identify. So for this, you have the option of adding few things in your dictionary. Let me show you how. Here आपके पास dictionary का option है. So just like how you saw that my name, it is something new to the platform. So I can add my name here. I can add any word. Supposedly आप सब different domain से है, कोई psychology है, कोई microbiology है, तो आप अपने documents में use words which are very domain specific, which are relevant to only your field of study. So you can add such words to your personal dictionary here, लैंग्वेज डिक्शनरी। और जब आप वो वर्ड्स यूज करेंगे अपने कंटेंट, अपने डॉक्यूमेंट में, वो एरर्स हाईलाइट नहीं हो। The other option is also like the language dictionary. Let me show you. Here you can just type any word
and you can look up for its meaning. So आप देख रहे हो कि ये word शायद मुझे नहीं पता इसका meaning. So I have just added this word, and any word you want to look up to, it will show you all the meanings, the synonyms, the antonyms, the examples. So you get the entire etymology of a particular word that you want to look up in the Langful dictionary. So this is basically how the writing module works. All right. Now the next thing is the get certified option. Yes, 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 excuse me, मैम yes. मैम राइटिंग मॉड्यूल के लिए डॉक फाइल ही वर्क करता है या वी कैन अपलोड पीडीएफ आल्सो? Uh, No, PDF will not work, ma'am. See, PDF will technology not. wise, analyzing PDF is it is not possible. ओके, तो वी कैन नीड टू अपलोड डॉक फाइल ओनली. Yeah, TXT doc you ओके, can upload. Yeah. ऑलराइट, थैंक यू. All right. So the next option is the certification that Satish sir was talking about. So Langquill offers you, Langquill में आपको 7 levels of certification मिलेगी. Starting from the very basic level of certification, going up higher to the proficient level of certification, that is level 7. तो यहाँ पे आपको हर एक level of certification में आपको all the 6 modules will be tested. आपको हर मतलब every module जो भी मैंने अब तक दिखाया, that is LSRW, listening, speaking, reading and writing, along with grammar और vocabulary, ये all the 6 modules will be tested. तो आपको यहाँ पे देखिए मेरा अभी level 1 certification पे है. तो हाँ, ये यहाँ पे अभी जब बेसिक लेवल में स्टार्ट करेंगे लेवल 1 या लेवल 2, वो थोड़ा आपको इजी लग सकता है. You might think that what is this? Like these are very simple and easy questions. But even in that, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा ऐसा questions मिले जो शायद आपको थोड़ा tricky लगे. So that is why we always emphasize on the fact that start your certification from level 1. You have to start any which ways. So that you are challenged at every step, and in a process you get to brush up your overall इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ होल. सो आप ये सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड बिफोर आई मूव ऑन, द वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज दैट ऐसा नहीं है कि व्हाटएवर यहाँ पे सर्टिफिकेशन है कंटेंट रैंडम है, ऐसा नहीं है. व्हाटएवर वी हैव इन लैंग्वेज इज rightly mapped to the CEFR level. Now, what is CEFR? CEFR ऐसा है कि ये एक common parameter है to assess every individual's language ability, English language ability. इसको बोलते हैं Common European Framework of Reference for Languages. So हम लोगों का जो 7 लेवल का 7 लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो each of the level of CEFR से rightly mapped किया हुआ है. How it is mapped? If you want to see, you can just go through this content and see that how each level of certification that Langquill provides is rightly mapped to the corresponding level of CEFR. So that your learning process doesn't go in vain. You just not keep on wondering that am I learning something fruitful? Am I learning? Will this really help? It will definitely help because it is mapped to the CEFR standards. Now, when you want to take the certification, you have the option to go and start directly with the certification process. All right. So you have the option to go and start the certification process. Also, it may so happen that when if you are one of the like if you ask me, I am good in writing, I'm good in vocabulary, but I am not very good in grammar. So what I can do is I can just go and read the grammar topics that I am not very confident with. I can take the quiz like I don't know what is parts of speech. So let me read. I go and I read this topic, and then here I have the option to also take a quiz that is based on this particular topic. So this way I can always brush up my skills before I finally go and take the certification.